to 8 language translations in different languages, international languages. And if you get that translation equipment, you will be able to understand whatever is going on during the sessions, technical session, as well as in the morning inaugural session. If you get the translation equipment, you will be able to understand in different languages as per your convenience, because as per the UN language schedule, we have facilities for translating in 6 international languages as well as 1 Hindi language. So Hindi and other 6 international languages, we have the facility of translation is available, and you can get the translation equipment from outside the counter. On the counter it is available, you can get it from there. Namaskar, good morning. Plant Genetic Resources and Food and Agriculture यानी ITPGRFA पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संधि की गवर्निंग बॉडी के 9th सेशन से जुड़े इस इनॉग्रल सेशन में आप सबका स्वागत है. We welcome all of you in this 9th session of this inaugural function, which is going to be just going to start in a few minutes. That is based on plant genetic resources for food and agriculture, that is ITPGRFA. Honorable Minister of
Agriculture and Farmers Welfare Government of India, Shri Narendra Singh Tomar is going to arrive in a short while. So before that, I will request all of you to please take your seats. And before taking the seats, I will request all of you to get translation equipment from the counter outside this hall, so that during the deliberations, during the conference, whatever is going on the stage, all the proceedings, you will be able to understand properly. And we have made arrangements in 6 international languages recognized by the United Nations. We have facility in translation in 6 international languages as well as Hindi. So I will request all of you to please get the translation equipment from the counter, so that during the deliberations you will understand whatever is going to be proceedings, all the proceedings during the day. I will request you also that please put your mobile phone on switch off or on silent mode during the deliberation, so that no disturbance is there to your companion or to the proceedings. And I will request all the guests, all the dignitaries, all the delegates to take their seats in the hall, because in a short while, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji, who is the chief guest in this inaugural session, he is arriving in a short while. So I will request all of you to please take your seats as early as possible. Ladies and gentlemen, may I now request all the dignitaries, all the delegates who have come here in India, in the capital of India, in Delhi, for this conference, for this 9th General Body Session. I will request all the delegates to take their seats as early as possible, because Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, who is the chief guest today, he is just arriving in a short while. So I will request all of you to please take your seats. Before taking the seat, I will request all of you to get the translation equipment which is available out of this hall on the counter, so that during the proceedings you will be able to understand, listen in different languages. We have 6 international languages recognized by the UN, and 1 Hindi language translation facility during the conference. So I will request all of you to please take the translation equipment and then take your seats, and also switch off or put your mobile phone on silent mode, so that without any hindrance, without any disturbance, we will be able to proceed for the proceeding for the whole session and deliberations successfully, fruitfully. Please take your seats.
Hi, good morning. देख लेंगे सर, चेक कर लें। 상상공으로 상승화. ये थंबनेल कर लें, चेक कर लें। साथ बजाओ, बंद कर दो, बंद हो जाए। Please take your seats as early as possible. All the dignitaries, all the delegates, I will request all of you to please come inside and take your seats as early as possible because it's time to start the inaugural session and Honorable Minister is just about to reach in this hall. So before that, you please take your seats and get the translation equipment also so that you can get the translation during the proceedings. नहीं नहीं बस ठीक okay then show me sharp simple that's all can okay that's fine ये नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में, इसको इधर कर दे, थोड़ा उधर कर दे ना, इसको सेंटर में इधर ले आ दो, आप थोड़ा बीच हो गया, नज़र आओगे आप। हाँ क्या हाल है क्या आप इधर हैं Namaskar, good morning, ladies and gentlemen. Please, I will request all of you to please take your seats as early as possible so that we can start the proceedings. Honorable Minister, who is the chief guest today in this inaugural session, is just about to reach. We are very fortunate to have all of you here in Delhi, the capital of India, for this plant genetic resources for food and agriculture, yeah, that is ITPGRFA based international treaties governing body meeting, this 9th governing body session, and this inaugural session is going to start in a short while. So please take your seats, get the translation equipment as early as possible so that you can understand whatever is the proceedings going on the stage, and also put your mobile phone on silent mode at least, please.
This in this, yeah, both are thanks is fine. Yeah, you can come in. Okay. Okay. Okay, that's fine. All right, thank you. Sir. Ladies and gentlemen, please, once again, I request all of you to please take your seats as early as possible because Honorable Minister has arrived here and he is coming to this hall for inaugural session. Before his coming, please, I will request all of you. We will have enough time in during the day and during the session, different sessions, and we can interact, we can discuss so many things during this event. But just now, please take your seats so that we can start the inaugural session. Honorable Minister is coming in this hall for this inaugural session. Request is again there to get the translation equipment so that during the proceedings you can understand what is going on the stage. We have made arrangements in 6 international languages translation and 1 Hindi language also, so that everyone who is sitting here and who is a part of this event can understand in his or her own language what is going on. So please take your seats. जो भी हॉल में खड़े हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बैठ जाएं. प्लीज टेक योर सीट and get the translation equipment also and put your mobile phone on silent mode. All the dignitaries, delegates are requested to take their seats, please, as early as possible because Honorable Minister is arriving in this hall. Please clear the way. The passage is to be cleared as early as possible because the chief guest is arriving in this hall. So the entry gate and the passage needs to be cleared as early as possible. And please, all are requested to take their seats. All the delegates, all the dignitaries are requested to take their seats as early as possible because the Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji, who is the chief guest today in this inaugural session, he is coming to the hall, he is arriving here. So all the delegates, please take your seats. All the guests are requested to take their seats as early as possible and clear the passage. Please clear the passage. Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare. Ladies and gentlemen, Shri Narendra Singh Tomar is coming to this hall on the dais.
Let's please welcome Honorable Minister for Agriculture, Minister of Agriculture and Farmers Welfare with a big round of applause, ladies and gentlemen. Put your hands together and welcome Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar on the stage. It's great honor for all of us to have Shri Narendra Singh Tomar ji, who is the chief guest in this inaugural session. And I will request all of you to please, who are standing outside the hall, please come inside, take your seats, because we are going to start the inaugural session of this important event. Ladies and gentlemen, please take your seats. जो लोग भी खड़े हैं, the delegates who are standing or the guests, all are requested to take their seats as early as possible because we are going to start the proceedings. Please come inside and take your seats as early as possible. Namaskar. Ladies and gentlemen, Plant Genetic Resources for Food and Agriculture यानी ITPGRFA पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की गवर्निंग बॉडी के 9th सेशन से जुड़े इस इनॉग्रल फंक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भारत की इस धरती पर राजधानी दिल्ली में वी हार्टली वेलकम ऑल द डिग्निटरीज। We heartily welcome all the dignitaries, guests, delegates from different countries who are gracing this inaugural function as well as the event of the 9th session of the governing body International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. It's great honor for all of us to have you here in Delhi, the capital of India, for this important event. Ladies and gentlemen, we welcome all of you. I will request all the photographers to please clear the front place and take their place somewhere else so that we can start the proceedings. हमारे जो फोटोग्राफर्स आती हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने से प्लीज क्लियर कर देंगे, सामने का जो पैसेज है स्टेज के नीचे का उसे क्लियर कर दें और साइड से अपनी पोजीशन लेकर फोटो खींचेंगे तो बेहतर होगा। माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस उद्घाटन सत्र में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। एज ए चीफ गेस्ट ही इज हियर, ये हमारा सौभाग्य है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन दिस ओकेजन इन दिस इनॉग्रल सेशन। ऑनरेबल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री मनोज आहूजा जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन हु इज ऑल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, and Shri Abhilaksh Likhi ji, Additional Secretary in the Ministry, Chairperson 9th GB ITPGRFA, Ms. Yasmin Al-Bahlol, Shri Sanjeev Kumar ji, Additional Secretary and FA, Ministry, Ashwini, UN Resident Coordinator, India, Mr. Shombi Sharp, Chandrabhushan ji, Additional Secretary in the Ministry, Dr. K.V. Prabhu, Chairman, PPV and FR Authority, and Secretary ITPGRFA, Kent Nadozi. We welcome all the guests, all the dignitaries on the stage, and I will request Honorable Minister Sir and other dignitaries to proceed for the lighting of the lamp on this occasion. माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सचिवगण और सभी डिग्निटरीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे लैंप लाइटिंग के लिए आएंगे। This is a beautiful tradition in India. Whenever we have an event like this, an auspicious occasion, we start the proceedings with the lighting of lamp and we pray for the success, for the welfare and for the well-being of the humanity by lighting the lamp.
माननीय मंत्री महोदय का, माननीय सचिवगण और सभी डिग्निटीज का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनके इस कृपा के लिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन इन इंडिया। व्हेनेवर वी ऑर्गेनाइज एन इवेंट वी स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स विद लाइटिंग ऑफ लैम्प। और देवी सज्जनों, इस लैम्प के, इस दीप के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में खुशी आए, सबके जीवन में समृद्धि आए, सबके जीवन में सबका कल्याण हो, पूरी मानवता का कल्याण हो। और आइए हम वेलकम करें उन डिग्निटीज़ का जो आज इस मौके पर हम सबके साथ हैं, खासतौर पर ऑनरेबल मिनिस्टर सर जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और मैं इसके लिए निवेदन करूँगा श्री मनोज आहूजा जी, माननीय सचिव एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में हम सबके बीच में हैं, उन्हें यहाँ पर बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। ऑनरेबल माननीय मंत्री जी, जिनका नेतृत्व, जिनके लीडरशिप में भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तमाम ऐसे इवेंट्स और काम और प्रयास हुए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से और तमाम अलग अलग की तरह की चीज़ें हैं, जिसमें फसल बीमा योजना है, जिसमें नेचुरल फार्मिंग है, जिसमें किसानों के इनकम को डबल करने का प्रयास है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में नई रिवोल्यूशन लेकर आ रही हैं। जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उस विजन को धरातल पर एग्रीकल्चर सेक्टर में उतारने का दायित्व जिनके कंधों पर है और जिसके लिए वो रेगुलरली हम सबको मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री मनोज आहूजा जी से मैं निवेदन करूंगा। May I now request all of you to put your hands together to welcome Honorable Minister Sir, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंत्री महोदय का, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, इस इनॉग्रल सेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अश्विनी कुमार जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, की श्री मनोज आहूजा जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका भी स्वागत इस अवसर पर करेंगे। श्री अश्विनी कुमार जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सेक्रेटरी सर का स्वागत करें। श्री मनोज आहूजा जी का स्वागत आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री मनोज आहूजा जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीके यादव साहब से, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, वो इज सेक्रेटरी डेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मींस डेयर एंड डीजी आईसीएआर, कि उनका भी वो वेलकम करेंगे। डॉक्टर डीके यादव से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर हिमांशु पाठक जी का स्वागत करेंगे। डीके यादव साहब, डॉक्टर हिमांशु पाठक, वो इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ऑल्सो ही इज डायरेक्टर जनरल आईसीएआर, वो इज ग्रेसिंग द ओकेजन। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम डॉक्टर हिमांशु पाठक, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अश्विनी कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से, अश्विनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मिनिस्ट्री में हमारे एडिशनल सेक्रेटरी श्री अभिलक्ष्य लिखी जी को, जो कि जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस मंच पर, उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें। श्री अभिलक्ष्य लिखी, वो इज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उनका स्वागत विद योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम श्री अभिलक्ष्य लिखी जी। Ladies and gentlemen, I have a special point to say. We have some farmers, which has come as a surprise to us. Farmers have done art structure with 15 different varieties of native rice, which is depicting our honorable minister. They come by themselves and they have dyed with vegetable dye a shawl which they are presenting to him. Thank you so much. So this is a pleasant surprise, ladies and gentlemen. Farmers have made something very special as a gift, and that is being handed over to Honorable Minister Sir. मैं डीडीजी एनआईसी रंजना नागपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चेयरपर्सन 9th GB ITPGRFA मिस याजमीना एल बहलोल, उनको वेलकम करेंगे यहाँ पर। रंजना नागपाल जी, या प्लीज
And of course, you will put your hands together to welcome Ms. Yasmina Al-Bahlol, who is Chairperson 9th GB ITPGRFA. We welcome you, Ms. Yasmina, on this occasion, in this inaugural session. मैं DK यादव साहब से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, श्री संजीव कुमार जी, who is sitting on the stage, who is additional secretary in the ministry and FA also. DK यादव साहब से रिक्वेस्ट है कि वे आदरणीय संजीव कुमार जी का मंच पर यहाँ स्वागत करेंगे, उनकी उपस्थिति के लिए, इस अवसर पर उनकी गर्मामाई उपस्थिति के लिए. And we welcome him with a bouquet, a small gift and with a big round of applause, ladies and gentlemen, आपकी तालियों के साथ. अश्विनी जी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, श्री अश्विनी कुमार जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी. UN Resident Coordinator India, Mr. Shombi Sharp, is on the stage, on the dais, on the occasion, and I will request Ashwini ji to welcome the UN Resident Coordinator India, Mr. Shombi Sharp. आपकी तालियों के साथ, with a big round of applause, ladies and gentlemen, we welcome Mr. Shombi Sharp on the occasion. This is being done by Ashwini ji on our behalf, who is welcoming Mr. Shombi Sharp. And next, once again, I will request DK Yadav Sahab to please come on stage, and Shri Chandra Bhushan ji, Honorable Additional Secretary in the Ministry, Agriculture and Farmers Welfare, sitting on the stage. I will request DK Yadav Sahab to welcome Shri Chandra Bhushan ji on the stage. तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए. Put your hands together to welcome Shri Chandra Bhushan ji, Additional Secretary in the Ministry. I will request once again Ashwini Kumar ji to welcome Dr. K.B. Prabhu, who is Chairman, PPV and FR Authority. Ashwini ji से request है कि वे Dr. K.B. Prabhu, Chairman, PPV and FR Authority, उनको welcome करेंगे. तालियां आप सबकी तरफ से बजेंगी Dr. K.B. Prabhu के welcome में. और एक बार फिर से मैं DK यादव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से DK यादव साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए to welcome Mr. Kent Nadozi, who is Secretary, ITPGRFA, sitting on the stage. We all will participate with a big round of applause to welcome Mr. Kent Nadozi, Secretary, ITPGRFA. Ladies and gentlemen. So once again, we welcome all of you in this important event, which is going to start with this inaugural session today in the morning. Thank you, thanks to all, and may I now request Ms. Yasmina Al-Bahlol, Chairperson 9th GB ITPGRFA, for her welcome address, please. DK यादव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ हम सबके बीच यहाँ मंच पर विराजमान आदरणीय श्री शर्मा साहब, TR शर्मा साहब, DDG क्रॉप्स साइंस, उनका भी वेलकम आपकी तालियों के साथ. Honorable Minister Tomar, distinguished guests, Your Excellencies, dear delegates, ladies and gentlemen, it is my honor to welcome you to the inaugural session of the 9th session of the governing body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. I would like to start by extending my sincere gratitude to the Honorable Minister of Agriculture and Farmers' Welfare of the Government of India for hosting this session of the governing body. The Indian hospitality we have received since we arrived has been extraordinary. I thank you for that. The theme of this session is celebrating the guardians of crop diversity towards an inclusive post-2020 global biodiversity framework. The guardians of crop diversity are many. They include gene banks, plant breeders, scientists, researchers, and farmers.
The international treaty is the only legally binding global instrument that explicitly acknowledges the enormous contribution of farmers and local and indigenous communities towards the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture. It is noteworthy that India is a pioneer in safeguarding the interests of their farmers and in implementing Article 9 through national legislation. We are delighted to be here in New Delhi on this occasion and are looking forward to a week of fruitful deliberations. Thank you. We are grateful to Ms. Yasmina Al-Bahlol for her opening remarks and welcome remarks. Ladies and gentlemen, हम सबके पास FAO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर जियो दांग्यू का रिकॉर्डेड मैसेज भी है. वी हैव अ रिकॉर्डेड मैसेज फ्रॉम द FAO डायरेक्टर जनरल मिस्टर जियो दांग्यू. ये समय है जब हम उस मैसेज को सुने और उनके बेस्ट विशेस भी इसके ज़रिए हम तक पहुँचेंगी और कुछ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ मार्गदर्शन भी उससे मिलेगा. इट्स टाइम टू लिसन टू दैट मैसेज फ्रॉम FAO डायरेक्टर जनरल, प्लीज़. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished delegates, thank you to Prime Minister Modi and the Government of India for hosting this session of the International Trade on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. I'm pleased that this session is celebrating smallholder farmers as guardians of crop diversity. They are food heroes, and their contribution should be recognized. For almost 2 decades, the treaty has brought together FAO members to help the conserve and sustainable use of plant genetic resources. And it provides a large global exchange mechanism for plant genetics. And the treaty combines both food security and biodiversity protection, 2 issues that they are at the core of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Dear colleagues, the world is heading for a population of 9 billion. At the same time, the impact of the climate crisis and biodiversity loss are putting pressure on agriculture. We must feed more people with less, with fewer input, and safeguard our natural resources. The pandemic and ongoing conflicts are affecting the way we produce, supply, and consume our food. They have shown us how fragile our agri-food systems are and have put our global supply chain under pressure. To deal with these challenges, we must increase the use of diverse and resilient crops and their genetic resources. We must conserve the source of our food and agriculture, our seeds and other plant genetic material. The future of the food depends on it. The public and the private sectors, farmers and academia need to pick up the efforts to use genetic diversity sustainably and ensure they are made available for breeders and researchers to enable innovation. It will allow us to adapt our crops to the growing impact of the climate crisis and be more resilient to shocks in supply chains. The treaty is central to achieving these objectives. But to do so, we need capacity development, solid institutions, and strong partnerships. Currently, the number of the contracting parties of the treaty is 149, and I'm committed to support the efforts to get all FAO members to sign up to the treaty. Making this treaty truly universal will help to ensure that the agricultural diversity is saved, shared, and cared for. We must conserve this treasure for our descendants, for the food security of the current and future generations, and for the improved resilience and the preservation of our planet. Plant genetic resources are critical to better production, better nutrition, better environment, and better life for all living on one behalf. I wish you fruitful deliberations and successful outcomes. I thank you. हम बहुत बहुत आभारी हैं FAO के ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल मिस्टर जियो दांग्यू के, जिन्होंने इस विशेष अवसर पर अपना मैसेज भी भेजा, अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं और उस ट्रीटी के लिए जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज इन शॉर्ट दैट इज नोन एज ITPGRFA,
इस ट्रीटी को लेकर जो उनकी बेस्ट विशेस हैं, दरअसल ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मिलजुल कर एफर्ट करने का कोशिश करने का एक ऐसा जरिया बनेगा ये पूरा सेशन और पूरी प्रोसीडिंग्स जो हमारी यहाँ होंगी, और फ्यूचर के लिए एक ऐसा रास्ता बना सकेंगे जिसमें सस्टेनेबल तरीके से देश में और दुनिया भर में एग्रीकल्चर के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से लोगों के लिए न्यूट्रिशन हो, भोजन हो और उनका जीवन ठीक से आगे बढ़े और ये धरती और एनवायरनमेंट भी बचा रहे। इस पूरे इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर एक शॉर्ट फिल्म है एंड वी वांट टू डिस्प्ले दिस फिल्म and present before you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से कि जो ये शॉर्ट फिल्म है ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी, they may kindly play now this short film. I am tiny, but I am mighty. I am tiny, but I give birth to so many. I am tiny, but you need me. You may not realize it, but I help you live. You may forget that I exist, but exist I do. And if I live on, so can you. But not so long ago, I was gasping to stay alive, to continue taking care of you. My family and I were in danger of dying out and leaving this planet forever. In fact, some of my relatives did die out. Just as the rest of us were about to give up all hope, something remarkable happened. An earthly savior noticed our plight, picked us up, and nurtured us back to health. Just as I thought you had forgotten all about us, you saved us. And by saving us, you also saved yourselves. The climate has changed, and with it, so has the earth on which we all depend for life. Previously fertile land has dried up due to droughts or been swept away in unexpected storms, leaving farmers at a loss of seeds, of food, and of livelihoods. Without seeds, there would be no plants, no trees, no fruit, no vegetables, no grains. Fortunately, the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture works with farmers, plant breeders, and policymakers around the world to save, share, and take care of the seeds that feed us all. The International Treaty provides free and easy access to plant material needed around the world so that farmers are better equipped to face unexpected crises like weather emergencies. Farmers, indigenous communities, seed banks, and gene banks all play a pivotal role in ensuring crop diversity and food security for us and for our descendants. Thank you for being guardians of crop diversity. लाइफ को, ज़िंदगी को भी बचाना है और प्लैनेट को भी बचाना है, और सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, may I now request the UN Resident Coordinator India, Mr. Shombi Sharp, to please come for his address. इस मौके पर शॉम्बी शार्प जी से, UN Resident Coordinator, I will request for his address, please. Honorable Minister Narendra Singh Tomar, Mr. Q Dong-yu, Director General of FAO, by video, Ms. Yasmina Al-Balul, Chairperson, Mr. Kent Nandozi, Secretary, Mr. Shri Manoj Ahuja, Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare of India, and other dignitaries on the dais. It's a great honor to be here. Namaskar. मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। On behalf of the United Nations system here in India, as representative of the Secretary General of the United Nations here in India,
It's a great honor to be a part of this incredibly important international treaty on plant genetic resources for food and agriculture discussion. I would like to commend all of you, this incredible gathering, actually, of stakeholders here today, the governing body, contracting parties, delegates, partners, observers, for advancing the cause of biodiversity and food security. And I would like to especially thank the farmers here in the audience. As the son of a farming family in Kansas, I grew up with a deep appreciation for the hard work that farmers are making every single day to keep our planet fed and to take care of our environment. I'd like to thank India, of course, for hosting this session and for India's enduring commitment to sustainable agriculture, crop diversity, farmers' rights, and food security, both here at home and abroad through South-South cooperation. I'm very proud that the United Nations has been a partner of choice for the governments of India in this work for a very long time, practically since independence. In fact, Food and Agricultural Organization office here is one of our oldest, which opened in 1948. Colleagues, we face multiple and overlapping crises. There's no doubt about it. From the ongoing pandemic, which we still haven't quite put behind us, to the senseless wars ongoing, to the existential threats of climate change, the triple planetary crisis, all of these are converging together, creating a growing set of crises, from energy and food to inflation and supply chains. And for this reason, the reviving specter of famine, of malnutrition on a global stage haunts us. India, as we see here, is actually both a globally significant producer and vulnerable. This spring's record-breaking heat waves and monsoon floods in some parts have brought the impact of climate change on food production into very sharp focus. It has also brought the importance of having strong and adaptive social safety nets, like India's public distribution service, on the back of a global digital public goods national tech stack. So incredibly important, and an example that other countries can learn from. These are global challenges, and they require global solutions. And thus I am so pleased to see really practically the world represented here today, coming together in the spirit of multilateralism. And here in India, we see the spirit and the potential of the treaty embodied in so many different ways. A legislative and regulatory framework that safeguards the rights of farmers and recognizes their contribution to crop diversity. And of course, the incredible abundance and biodiversity of India's native plants and cultivars. Think of, for example, quinoa. Aside from our friends in the Andean states who had heard really so much of this wonder seed a decade or two ago, even in its native range, it had nearly disappeared. Yet local farmers preserved it for future generations, and now it has risen from obscurity to a globally recognized superfood. And the cultivation of this hardy plant has spread. For example, here in India, has now become a major producer, and it grows particularly well in the dry climate of Rajasthan. Here in India, with government leadership, we are also rediscovering the potential of the native millet as a nutritious and climate-resilient source of sustainable food security in a rapidly changing climate. In fact, with India's sponsorship from the government, the UN General Assembly has declared 2023 the Year of the Millet. An initiative that has the potential to bring millets the same international recognition as quinoa and to claim its rightful global recognition. So, colleagues, in conclusion, the advancement of the international treaty's equitable benefit and genetic diversity sharing mechanisms are more crucial than ever. The more shared plant diversity that we have, the more tools we have for climate adaptation and mitigation, the more weapons that we have against hunger, and the more opportunities we create for farmers,
All of these coming together, the brighter our future will be, and we will together achieve the Sustainable Development Goals. Thank you so much. आज की चर्चा अच्छी रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत आभार Mr. Shombi Shab for appreciating and acknowledging the efforts being made in India and by the Government of India for sustainable agricultural growth. देवी सज्जनों, जैसा कि मिस्टर शॉम्बी ने भी जिक्र किया और आप सब इस बात को जानते होंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उस समय से कृषि के क्षेत्र में ऐसे तमाम परिवर्तन हुए और वो परिवर्तनों के पीछे की जो सोच थी, जो उसके पीछे का विजन था, वो सिर्फ तात्कालिक नहीं था. फ्यूचर के लिए किस तरह से इस पूरी ग्रोथ को दिशा दी जाए और सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं, इंडिया के लेवल पर नहीं, बल्कि उसको ग्लोबली किस तरह से सस्टेनेबल बनाते हुए फ्यूचर के लिए उसको एक मजबूत दिशा दी जा सके. और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं. बहुत लंबी फेरीज थे, बट वी हैव मेड अ शॉर्ट फिल्म ऑन ऑल दीज एफर्ट्स. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से जो फिल्म बनाई गई है हमारे तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर, शॉर्ट फिल्म है, लेट्स सी दैट फिल्म. हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे किस तरह से, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत किस रूप में इसमें लीड ले सकता है. प्लीज़. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, several significant steps have been taken to modernize agriculture and its allied sectors to empower and to make the farmers self-reliant in the last 8 years. Where in the year 2013-14, the agriculture budget was only 21,933 crore rupees. It was increased to 1,24,000 crore rupees in the year 2022-23, with result of which where food grain production was only 265.05 million tons in the year 2013-14. It increased to a record 315.72 million tons in the fourth advance estimate for the year 2021-22. At the same time, where the production of horticulture crops was only 280 million tons in the year 2013-14, it increased to 341.63 million tons in the year 2021-22. The PM Kisan Samman Nidhi Yojana was implemented for the agricultural needs of the farmers. प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं. और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं. बातें हमारे जो खेल चलते बढ़िया. So far, more than rupees 2 lakh crore has been transferred to more than 11.37 crore eligible farmers. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched to help the farmers from natural calamities and crop losses due to unseasonal rains. हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था. अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी. उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने. और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ. Till now, more than 1,21,834 crore rupees have been paid to more than 11.35 crore applicant farmers under this scheme. In comparison to the year 2014, farmers are now getting 1.5 times more MSP, which is more than the cost of production of pulses, oilseeds and paddy. With this increased MSP rate, more than 991 lakh metric tons of wheat and paddy were procured in the year 2020-21. Record purchases were made by the government for wheat and paddy crops, amounting to 2,44,159 crore rupees, due to which more than 1.75 crore farmers were benefited. Agriculture and allied infrastructure is being developed with the help of 1 lakh crore rupees through the Agri Infrastructure Fund. AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है. इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं. ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है. More than 336.01 lakh new Kisan credit cards have been issued. To make optimum use of nutrients in the soil, issuance of soil health cards to the farmers was also initiated. More than 23 crore soil health cards have been issued in different phases till date. To increase the income of the farmers and to keep the environment healthy, Paramparagat Krishi Vikas Yojana was promoted. ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है. प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है
और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। To increase the water efficiency at the farm level, the per drop more crop scheme is being implemented for the promotion of micro irrigation. In collaboration with NABARD, a micro irrigation fund of rupees 5,000 crores has been created. 10,000 new FPOs are being formed and promoted. मैं एपीओ का डायरेक्टर हूँ। मेरा एपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हुआ। To ensure that the farmers get maximum price for their crops, all the mandis across the country are being linked through the eNAM platform. To promote employment at the village level, the National Beekeeping and Honey Mission was also launched. To make the country self-sufficient in edible oil, the National Edible Oil Mission was launched. More than 11,000 crore rupees have been allocated under this mission. For the movement of perishable agricultural products, Kisan Rail has been started. To ensure the movement of these perishable fruits, vegetables and other horticultural products, farmers are getting benefited through the operation of Kisan Rail. To modernize agriculture-related works, smart tools are being provided. Drone technology is one such initiative being adopted for irrigation and spraying of pesticides and nutrients. हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। 8 years of reforms and transformation in agriculture has led to unmatched achievements and magnificent performance. वर्ष 2014 के बाद इन वर्षों में जो तमाम प्रयास हुए हैं, बहुत सारी पहल हुई हैं, रिसर्च और इनोवेशंस के ज़रिए ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर आई हैं जिसमें हमारे फार्मर्स, हमारे किसानों को बेहतर से बेहतर ढंग से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनके जीवन को मिले और ह्यूमैनिटी को, मानवता को उसका लाभ मिल पाए। इस कड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसान सम्मान निधि का जिक्र हुआ, डिजिटल फार्मिंग है, फार्मर्स वेलफेयर के लिए बहुत सारे तमाम तरह के प्रयास किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए पूरे देश में एक नई तरह के मूलभूत ढांचे के निर्माण की बात हुई और इस तरह से मास प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन बाय मासेस को एक नई गति मिली है, नई दिशा भी मिली है। मैं इस अवसर पर रिसर्च और इनोवेशंस में बहुत सारे जो प्रयास एग्रीकल्चर के सेक्टर में हुए हैं और उन प्रयासों से बहुत एक सही दिशा मिल पाई है। मैं हमारे लिए खुशी की बात है कि इस मौके पर डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड वो इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एड्रेस के लिए बधाएं। डॉक्टर हिमांशु पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। परम श्रद्धेय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री तोमर जी, मिस यशमिन बहलोल, चेयरपर्सन 9th session of the governing body International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Sri Manoj Ahuja ji, Secretary Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Mr. Sharp, Mr. Kent, all the very distinguished delegates on the dais and off the dais, Kisan Bhai Bandhu, all the participants, representatives from press and media, ladies and gentlemen, भारत की इस पुण्य भूमि में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। Friends, sustainable use of plant genetic resources is the basis of achieving high yield, better quality, and climate resilience in agriculture. Efficient use of the genetic resources will lead to a hunger-free, food and nutrition-secure world. Plant genetic resources can provide solution to several challenges to global as well as Indian agriculture facing today. We therefore should use every available tool and technology, from genomics to GIS to informatics, for trait identification that can lead to scale-independent solutions to the agricultural problems. We should systematically document the traditional knowledge and deliberate on digital sequence information to enhance our ability to utilize the genetic resources.
At the same time, we need to ensure that the benefits of the plant treaty reach to the producers, to the consumers, and of course to the farmers. This requires each country to establish legal and procedural framework, research and development institutions, as well as develop trained human resources. India has a vast network of research institutes that have the capability to carry out germplasm collection, evaluation, preservation, utilization, plant breeding, and linkages with the farmers. As a result, the germplasm conserved in India's state-of-the-art and second largest gene bank in the world is well supported for enhancing their efficient utilization. India has been benefited from the expertise and experiences of other countries in the past. We would like to strengthen those collaborations and offer the knowledge that we have gained in cereals, pulses, oilseeds, millets, and other crops to enhance the utilization of the gene pools. We would like to offer capacity building programs in gene banking, cryopreservation, and trait-specific evaluation. We would like to collaborate with the gene banks and institutions around the world for their evaluation. And identify the germplasm against biotic as well as abiotic stresses. We can also offer postgraduate programs in plant genetic resources to prepare the next generation of researchers to address the emerging challenges of agriculture. Dear delegates, the verse of Maha-Upanishad, one of the ancient texts engraved in the entrance hall of Indian Parliament. It reads, Ayam nijam parobeti ganana lokhu chetasam udara charitanang tu busudhaiva kutumbakam. It means the distinction of this is mine and this is not mine is made only by the narrow-minded and the ignorant. For those who have broader vision and who know the truth, the whole world is one family. The multilateral system essentially builds on this principle of shared vision, shared resources, and shared responsibilities for the humanity. I would like to emphasize that the exchange of germplasms should be ensured through the multilateral systems. We should explore the avenues to share crop species to overcome the climate challenges and achieve food and nutrition security and ensure the benefit sharing. The 9th session of the governing body of the ITPGRFA covers all the important areas of mutual collaboration and benefit sharing. Let us commit ourselves to enhance the progress of multilateral system to prepare all of us for the post-2020 global framework. Friends, we share a common future. Let's make it better and prosperous by sharing and working together. Thank you all for your participation and making the event a success. Jai Hind. बहुत बहुत आभार डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। देवी सज्जनों, भारत में कृषि क्षेत्र में जिस तरह के प्रयास हुए हैं, आज की आवश्यकता और भविष्य को लेकर भी, उस प्रयासों में चूंकि समय की आवश्यकता के हिसाब से बदलाव की जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए दिशा, उसके लिए विजन प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार की तरफ से न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वो मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं और होंगी भी। और ख़ासतौर पर इस तरह की ट्रीटीज़ के माध्यम से, इस तरह की संधियों के माध्यम से, जब उस सोच में जिसमें सबका लाभ हो, बेनिफिट सभी का हो, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से एक बेहतर विश्व का निर्माण होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मनोज आहूजा जी, वो इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें और कृषि मंत्रालय के तमाम प्रयासों से भी हम सबको अवगत कराएं। ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, agriculture ministers from member countries, chairman and secretary of the treaty, the UN resident coordinator, the distinguished guests, scientists, experts, farmers,
representatives of various organizations from the seed sector, civil societies, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार. It gives me great pleasure to welcome all of you to New Delhi for the 9th governing body meeting of the treaty. And I must again thank Honorable Minister Shri Tomar ji for taking up and announcing it in the 8th governing body meeting in Rome. A short film was shown on the direction and the path Indian agriculture is taking under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and the strides which have been made in this sector are obvious to all. As you are aware, India is one of the leading producers of food grains, fruits and vegetables, milk globally, and is fast transforming the agriculture sector in India to make it a global player. Indian agriculture is primarily made up of small and marginal farmers. About 90% of our land holdings are small and marginal, would be less than 2 hectares. It has a diversity of agro-ecological zones and therefore is able to produce commodities across the board, and it has strategies and programs which are in position, which are specifically aimed at helping small and marginal farmers so that they can compete globally. We do hope, we made all arrangements for your discussions here. I am sure, and we have made a lot of efforts to make you comfortable. We believe that you should be comfortable, feel relaxed, so that you can carry out these hard and difficult negotiations, which we feel are very, very essential for global concerns of the future. You must be also aware that India has been one of the original countries which signed this treaty and is a leader under Article 9 to ensure farmers' rights. It has set up a legislation and it has set up a framework to ensure that. The problems relating to conservation of germplasm, its exchange, giving due benefits, recognizing the rights of indigenous communities and farmers, and at the same time marrying the latest technology with these is of utmost importance. I do hope that these deliberations which will take place here would further the aims of the treaty and ensure that the multilateral system for exchange is expanded, ensures that the rights of the farmers and indigenous communities are protected, benefit sharing is built in, and therefore the challenges which all of us have mentioned, which are coming up, for example, climate resilience, sustainability, can be addressed in a very effective manner. I wish you all the best, and I also look forward to the deliberations of this meeting and do hope that New Delhi governing body meeting would be a landmark in the series of meetings which will take a very big progressive step further for the globe. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री मनोज आहूजा जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देव सज्जनों, भारत की संस्कृति और संस्कार हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सबके साथ न्याय हो इस बात को सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक होता है. और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को जिस रूप में वैश्विक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में लीडरशिप रोल में स्थापित किया है, आज इस देश का गौरव बढ़ा है, लेकिन विश्व के लिए एक नई शुरुआत इस रूप में है कि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था जिसमें सबका लाभ हो, इस सोच को आगे बढ़ाने का भी अवसर आया है. और उस अवसर को, उस सोच को कृषि के क्षेत्र में जिनके नेतृत्व में हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैं आपकी तालियों के साथ, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू प्लीज वेलकम वंस अगेन श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज एड्रेस. उनके संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर. श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री महोदय. सभी को नमस्कार.
आज निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि रोम के बाद हम सब लोग फिर एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी राष्ट्रों से पधारे प्रतिनिधियों का भारत की ओर से हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि 11 नवंबर 2019 को मुझे रोम में संधि के शासी निकाय के 8वें सत्र को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस मौके पर मैंने आप सब लोगों से आग्रह किया था कि अगली बैठक भारत में हो, और ये निमंत्रण जब मैंने आप सबको दिया तो सभी ने खुशी खुशी स्वीकार किया, और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में पधारे हैं, भारत की मेज़बानी को स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि पादप संधि का उद्देश्य फसलों की विविधता में किसानों और स्थानीय समुदाय के भारी योगदान को मान्यता देना है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि इस बार भारत में आयोजित सत्र के लिए आप सभी ने विचारपूर्वक सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ ट्राइब डाइवर्सिटी टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विषय को चुना है। यह विषय सामायिक भी है और आवश्यक भी है। सदियों से जनजातीय और पारंपरिक कृषि समुदायों ने अपने पास उपलब्ध समृद्ध आनुवंशिक सामग्रियों के आयामों का निरंतर अनुकूलन किया है और उन्हें आकार दिया है। इसने विशाल और विविध सांस्कृतिक पौधों की विविधता के आसपास जीवन और वाणिज्य, पाक उद्देश्य और मौसम के अनुसार अविश्वसनीय किस्म, स्वाद और पोषण और इसके उपचारात्मक दवा के रूप में भोजन प्रथाओं को जन्म दिया है। कोविड महामारी ने हमें काफ़ी कुछ सबक सिखाए हैं। भोजन की उपलब्धता और पहुंच स्थिरता और शांति के लिए सर्वोपरि है। भारत नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें वर्ष द वर्ष भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हमें फसल की विविधता और विविधीकरण से मिलता है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं भारत के कृषि समुदायों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उन देशों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं जहां खेती उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां फसल जैव विविधता जीवन का हिस्सा है, और जिनके स्वदेशी लोगों व किसानों ने फसल आनुवंशिक संसाधनों को आकार दिया है और जो विश्व में कहीं भी प्रजनन का आधार बनाते हैं। इसलिए मैं दोहराता हूं कि खाद्य सुरक्षा की कीमत पर कोई भी बातचीत संभव नहीं है।
सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन आवश्यक एवं मौलिक अधिकार है। विकासशील देश यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित होंगे खाद्य उत्पादन करने वाले किसानों के अधिकारों से कभी समझौता न किया जाए। और तो और यह समुदाय पादप आनुवंशिक संसाधनों के अस्तित्व के लिए भी जिम्मेवार हैं जो हमारे पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि पादप आनुवंशिक संसाधन प्रजनन चुनौतियों के समाधान का स्रोत हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मूल उत्पत्ति वाले स्थान के विनाश और जलवायु परिवर्तन के कारण पादप आनुवंशिक संसाधन भी कमज़ोर हैं। उनका संरक्षण मानवता की साझा जिम्मेवारी है। हमें इन्हें संरक्षित करने और सतत उपयोग करने के लिए सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। हमारे पास दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अमूल्य आनुवंशिक संसाधनों और बहुमूल्य पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किया है। पादप संधि कंसल्टेंट सैकड़ों प्रजातियों में फैले संसाधनों, ज्ञान और पद्धतियों का समर्थन और संदोहन कैसे कर सकते हैं। इस संधि को सभी फसल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और विनिमय का समर्थन करना चाहिए। वास्तव में मैं आपसे कम उपयोग की जाने वाली संबंधित फसलों के साथ ही फसलों की वन्य प्रजातियों के समय रहते संरक्षण और उपयोग पर जोर देने का आग्रह करता हूं। जलवायु अनुकूल कृषि और पोषण सुरक्षा के लिए हमारा संघर्ष आपके निर्णय और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उन्नत जीनोमिक और जैव सूचनात्मक उपकरणों का उपयोग से प्राप्त आनुवंशिक जानकारी में IPR का विषय बनने की क्षमता है। दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और समृद्ध किया गया पारंपरिक ज्ञान सामान्य ज्ञान बन जाता है। पृथ्वी पर PGR संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक हितों और विरासती जीवन मूल्यों को संतुलित करने की जिम्मेवारी ITPGRFA जैसे बहुपक्षीय मंचों पर है। भारत पादप आनुवंशिक संसाधनों की संपदा को साझा करने का दृढ़ समर्थक रहा है। IARC जीन बैंक और अन्य राष्ट्रीय जीन बैंकों पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि लगभग 10% जर्मप्लाज्म भारत मूल का है। हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का अनुसंधान और सतत उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तथापि यह बहुत महत्वपूर्ण है, पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रणाली से प्राप्त पादप आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले व्यापार के प्रत्येक डॉलर को सामान्य रूप से साझा किया जाना चाहिए। मैंने पिछले बार भी यह मांग की थी कि यह संधि एक परिचालन व्यवहारिक भविष्य के लिए तैयार और लचीला लाभ साझाकरण ढांचा स्थापित करेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम सहमति की कमी और कोविड महामारी ने सामान्य लेन देन की अनुमति नहीं दी। मैं आप सभी से उस लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का इस कॉन्फ्रेंस में अनुरोध करता हूं। हम समय के साथ पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन में किसानों, स्वदेशी समुदायों, आदिवासी आबादी, विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं के योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जब तक संधि में संशोधन और सुधार पर विचार करते समय उनके हितों को ध्यान में रखना यह हम सबका कर्तव्य है। भारत बहुपक्षीय समझौते की प्रतिबद्धताओं पर अपने विश्वास और कार्यों में दृढ़ है। तथापि जब तक हम उत्तर एवं दक्षिण के बीच की खाई को समाप्त नहीं करते और संधि के संस्थापकों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तब तक हम कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे।
ITPGRFA का अनुच्छेद 9 किसानों के अधिकारों से संबंधित है तथा भारत इसका पूर्ण रूप से अनुपालन करता है। इसके लिए PPV एवं FR अधिनियम 2001 में प्रासंगिक प्रावधान निहित है। अब तक 166 किसान कृषि समुदायों को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तथा यह ITPGRFA के अनुच्छेद 9(2) खा के अनुपालन के अनुसार है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि वर्ष 2017 के अपने 7वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय ने किसानों के अधिकारों के कार्यान्वयन के में संभावित विकल्पों के लिए किसानों के अधिकारों पर एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत इस क्षेत्र में अपना अनुभव और नेतृत्व प्रदान करता रहा है। मुझे विश्वास है कि इस विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित की गई सूची कई संविदाकर्ता पक्षों के लिए किसानों के अधिकारों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम पद्धति को समझने तथा उसके कानून और राष्ट्रीय नीतियों में उपयुक्त उपाय करने को संभव बनाएगी। मुझे पता है कि पादप संधि का यह प्रतिष्ठित निकाय डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, बहुउद्देशीय पादप प्रजातियों के लाभ, साझाकरण दरों आदि जैसे मुद्दे पर आम सहमति ढूंढने के लिए जूझ रहा है। मुझे आपकी क्षमताओं और बहुपक्षवाद में आपके अटूट विश्वास पर भरोसा है। आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने के सर्वोत्तम रास्ते मिलेंगे। मैं आप सभी से रिवाइव, रीसेट और रिकवर का अनुरोध करता हूं और मुझे आशा है दिल्ली के 9वें जीवी बैठक परिवर्तन का एक ऐसा बिंदु होगा जो पादप आनुवंशिक संसाधनों में बहुपक्षीय प्रणाली के भावी राह को निर्धारित कर सकने में सफल होगा। वैश्विक कृषि अनुसंधान स्पष्ट कारणों से प्रमुख फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि मैं आपका ध्यान छोटे मिलेट, छोटी दालों, छोटे फलों और पत्तेदार सब्जियों पर केंद्रित करना चाहता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास इन फसलों पर काम करने वाले संसाधनों का एक बड़ा नेटवर्क है। हम एक साथ फसलों के इन समूहों के आनुवंशिक संसाधनों के दस्तावेज, अनुसंधान, विनिमय और उपयोग के लिए विशेष कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं। वे अनियमित जलवायु कुपोषण के खिलाफ हमारे सबसे अच्छे हथियार हैं। हमें सार्वजनिक और निजी भागीदारों से हाथ मिलाकर हर उपलब्ध तकनीक, अंतरिक्ष से जीनोमिक्स तक और संसाधनों के एक एक पैसे का उपयोग करना चाहिए। विश्व शक्तियों के एक अच्छे संतुलन पर निर्भर करती हैं। जेनेटिक रिसोर्स गवर्नेंस को कॉमर्स के साथ साथ कन्वर्सन का, इक्विटी के साथ साथ यूटिलाइजेशन का, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का और बेनिफिट शेयरिंग के साथ एक्सेस का संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है यहाँ एकत्र बुद्धिजीवी लोग पिछले 2 वर्षों से खोए हुए समय की भरपाई के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे, आम धारणा से हटकर नीति तैयार करेंगे और भविष्य में निश्चयात्मक संकल्प की सिद्धि के लिए कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। हमने अपने किसान संरक्षकों को GB9 के लिए हमसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। कृपया हमारे किसानों की प्रदर्शनियों को देखने और उनसे बातचीत करने के लिए आप समय निकालें और जब आप हिंदुस्तान पधारे हैं तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान सने सने अपने कृतित्व से आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। देश में किसानी भी बढ़ रही है, किसान भी समृद्ध हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल देने का एक सद प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर बहुत सारी अधोसंरचनाएं जो देश को भी प्रेरणा देती हैं और दुनिया को भी मार्ग दिखा सकती हैं, उनका भी निर्माण भारत में हुआ है।
जब आप भारत में आएंगे तो किसानों की विधा को भी देखें और अनेक ऐसे स्थान जिनके बारे में आपको बताया गया होगा उनको देखने के लिए भी समय निकालें, तो आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं पुनः भारत की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबका यह विचार विमर्श सफल हो, सार्थक हो और दुनिया के काम आवे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से आपने देश के जन जन तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबका नेतृत्व किया है, वो अपने आप में बहुत विलक्षण है। और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में जो हम सेलिब्रेट करेंगे, दरअसल उसके लिए भी भारत में पूरा एक जबरदस्त मोमेंटम आपके नेतृत्व में बना हुआ है। तमाम अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिनको साथ लेकर, तमाम एजेंसीज हैं जिन्हें साथ लेकर, यहाँ तक कि पब्लिक को, एनजीओज को, ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर एक नया जोश, एक नई ऊर्जा जो है मिलेट्स को लेकर देश में दिखाई दे रही है। और एशिया और अफ्रीका तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। 7000 वर्ष पहले से इस तरह मिलेट्स की खेती होती रही है, जो हमारे न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट की हेल्थ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आई होप कि पूरे दुनिया में इस तरह का एक मोमेंटम बनेगा मिलेट्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लीडरशिप में, कि प्लैनेट से लेकर लोगों की हेल्थ तक को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। वी विल इंश्योर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द प्लैनेट। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का उनके इस नेतृत्व के लिए। एंड नाउ विद आई विल रिक्वेस्ट Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, Mr. Kent Nadozi, to come forward for his vote of thanks. Thank you very much. Honorable Minister Tomar, Honorable Minister Selo, Honorable Minister Yanga, the UN Resident Coordinator Sean Bishop, respected Secretary Pathak, respected Secretary Dr. Ahuja, Your Excellencies, distinguished guests, dear delegates, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is my privilege to propose a vote of thanks for this inaugural session. On behalf of the United Nations Food and Agriculture Organization and the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and all of us gathered here this morning, I would like to extend a sincere vote of thanks to our chief guest, Honorable Minister Tomar, for hosting the 9th session of the governing body of the International Treaty and for honoring us with his presence on the opening day of our global gathering. His presence here today has enhanced the importance of our proceedings and is a testimony of the leadership of India in the issues that the international treaty deals with. We are extremely grateful to you, sir, for your insightful address and for taking the time to be here with us today in person on this occasion. We are particularly grateful to the Government of India for the warm and generous hospitality in hosting the 9th session of the governing body of the International Treaty in the historic capital of India, New Delhi, and for providing all delegates and participants of this session with excellent facilities. I would also like to take this opportunity to extend our gratitude to Secretary Ahuja and Secretary Pathak for joining us today, sharing important perspectives, and for ensuring that we have all the facilities needed to conduct this session efficiently. I would also like to thank all of your staff
who have been working tirelessly behind the scenes to ensure the smooth organization of our governing body. In addition, I would like to extend our thanks to our UN colleague, Resident Coordinator Sharp, for joining us and for sharing the UN perspective. And finally, to thank all of you delegates for making the time to travel to join us in India. And I know you all join me to thank the government of India for their hospitality, and you have seen and experienced that warm hospitality. I thank you all. Thank you, Mr. Kent Nadozi, for your vote of thanks. Ladies and gentlemen, with this, we come to the end of inaugural session of 9th session of the governing body, ITPGRFA. But we will continue with our plenary session. I will request all of you to remain seated. But अभी के लिए माननीय मंत्री महोदय जो है उनके और जो इस आयोजन में आगे जो अवॉर्डीज़ हैं, हमारे अवॉर्डी फार्मर्स हैं, उनके एग्जीबिशंस और स्टॉल्स को विजिट करने के साथ साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स और डिलिब्रेशंस होंगी। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। एक बार तालियों के साथ प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर टू thank Honorable Minister Sir Shri Narendra Singh Tomar ji for his gracious presence, for his address and guidance. बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आभार श्री मनोज आहूजा जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल ICAR। श्री अभिलक्ष लिखी जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। चेयरपर्सन 9th GB ITPGRFA, Ms. Yasmina Al-Bahlol, Sanjay Kumar ji, Additional Secretary, UN Resident Coordinator India, Mr. Shambir Sharp, Chandrabhushan ji, Additional Secretary, Dr. K.V. Prabhu, Chairman, PVB and FR Authority, and Mr. Kent Nadozi and Dr. T.R. Sharma, और सभी dignitaries का हम आभार व्यक्त करते हैं. We are thankful to all of you. आप